Welcome to my YouTube channel Political Facts by Swadhin sir. आज ओडिशा पॉलिटिक्स रो एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु ऊपर आलोचना करबा ताहा होची गवर्नर ऑफ ओडिशा। चलंतु आरंभ करबा एही विषय वस्तु। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. The real executive power are exercised by the chief minister and the council of minister while the governor function according to the constitutions. यार अर्थ है कि जे गवर्नर होचंती कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट अर्थात नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट माने समस्त गुड़े काम जो संविधान दृष्टि करा जाए ता गवर्नर द्वारा होता है माने गोटे राज्यर संविधानिक मुखिया किए कहले गवर्नर किंतु कार्यवृद्धि दृष्टिकोण सब गुड़े कार्य क्या द्वारा होता है ना चीफ मिनिस्टर द्वारा से चीफ मिनिस्टर को कहगला रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एवं गवर्नर को कहगला कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट अटंती रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटंती फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट अटंती एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज प्योरली वेस्टेड इन द गवर्नर से संविधानिक मुखिया हवा सहित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि से काम करती एवं राज्यर प्रथम सिटीजन बेसिस नागरिक बेसिस रही था एवं एग्जीक्यूटिव पावर जो अच्छी स्टेट प्योरली क्या हाथ में थाए ना गवर्नर हाथ में थाए। वर्तमान आम आलोचना करबा सम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स व्हिच आर क्लोजली एसोसिएटेड और रिलेटेड टू द गवर्नर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट। आम यदि आर्टिकल आलोचना करबा 153 तो से गवर्नर ऑफ स्टेट माने एवरी स्टेट शैल हैव ए गवर्नर वन पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट माने 153 धारा अनुଯାୟୀ कहुचे कि गोटे राज्य कि दुई रु तदुर्ध राज्य गोटे गवर्नर हो पारे। दिस आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 154 कौन कौन ना एग्जीक्यूटिव पावर द गवर्नर है एग्जीक्यूटिव पावर द स्टेट इज वेस्टेड ऑन द इन द गवर्नर एंड एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दृष्टिकोण जो कार्यपालिका क्षमता दी राज्यर टोटाल कार्यपालिका क्षमता दृष्टिकोण किए मुखिया ना गवर्नर एवं 154 धारा ताकि उल्लेखित करा 155 कौन दे 155 ना अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय होम ना गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। 156 कौन कहे ना तार टेन्यूर उपर दी इट होल्ड ऑफिस फॉर 5 years बट सर्व ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नॉर्मली गवर्नर एक्चुअली टेन्यूर होची 5 years किंतु तांको कार्यकाल प्योरली बेस करे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट ऊपर बेस करे तार कार्यकाल केते ही पारिबो किंतु नॉर्मली संविधान दृष्टि केते ना 5 वर्ष। 157 रे कोन देछि क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया he must have completed the age of 35 years of age 35 वर्ष अतिक्रम कला परे जड़े गवर्नर ही पारिबो। 157 रे अगेन कौन दी ना कंडीशन ऑफ द ऑफिस केमती हम कथा ना कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एट एक्चुअली 158 हेबो 158 इटा हेबो कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर किए गवर्नर हो पारबो ना जे स्टेट लेजिस्लेचर कोनोसी मेंबर होई नथिबे cannot hold any office of the profit entitled to salary and official residence माने कौन सी प्रकार सरकारी चाकरिया हो नथिबे माने स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर हो नथिबे एमिति किछि क्राइटेरिया थाना रही अछि। 159 कोन कहूचे ना ओथ ऑफ द गवर्नर he take oath before the chief justice of the high court or senior most judges। ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट से काठार के शपथ ग्रहण करंती ना चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। देन 160 कोन कहूचे ना कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट में मेक अरेंजमेंट इन स्पेशल सिचुएशंस माने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अच्छी से राज्य लेवल ले कॉन्टिजेंसीटा क्या द्वारा प्रिपेयर हुए ना गवर्नर द्वारा प्रिपेयर हुए। देन 161 पार्डनिंग पावर ग्रांड पार्डनिंग पावर तब एक्चुअली गवर्नर को दिखाई गवर्नर कैन पार्डन रिप्राइव रेस्पाइट रिमिट सस्पेंड और कम्यूट सेंटेंस अंडर स्टेट लॉज। 162 रे कौन देछि ना एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर तांकर जो एग्जीक्यूटिव पावर छै ताको एक्सटेंड करि पारिबो डिफाइन्स द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। 164 कौन देछि ना अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स से राज्यर कोनोसी मिनिस्टर को से अपॉइंट कर पारिबो अर्थात चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करबा सहित सहित से अदर मिनिस्टर को मध्ये अपॉइंट करि पारिबे अंडर द आर्टिकल 164। 165 कौन दीजिए ही हैज़ द पावर टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल। 166 कौन दीजिए ना ही हैज़ द पावर टू कंडक्ट द बिजनेस
of legislative assembly and legislative council. Then under the article 167 कौन थी duties of the chief minister. CM keeps governor informed about the administrations. माने एटा देछि चीफ मिनिस्टर ड्यूटी चला कि जे से जहाँ काम करेंगे गवर्नर को जने किना काम करेंगे. 174 कौन थी ना स्टेट लेजिस्लेचर जो कंपोजिशन रही से गवर्नर रोलटा बहुत इंपोर्टेंट. माने स्टेट लेजिस्लेचर क्या क्या गठित स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर. So 174 is also most important. 175 कौन थी ना address and messages. Governor has the power to address and send the message to the legislature. This article is most important. 176 कौन थी ना special addresses. जदि गवर्नर फील करती ताहेले से स्पेशल एड्रेस माने फास्ट सेशन आफ्टर द इलेक्शन दोज फास्ट सेशन इज हेल्ड ऑन दैट सेशन द गवर्नर हैज द पावर टू डिक्लेयर द स्पेशल एड्रेस or the governor has the power to declare the special address after the after the elections. हला सहीटा को बहुत इंपोर्टेंट. आर्टिकल 200 कौन थी assent to the bills. Governor has the power to assent the bill, withhold the assent or return the bill. 201 कौन थी ना reserve the bill. President decide on bill reserved by the governors. 213 कौन ऑर्डिनेंस. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स. बहुत थर एक्चुअली ए आर्टिकल को लेकिन क्वेश्चन आसी सारे. गवर्नर कैन प्रोमुगेट द ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन. जिते बेले व्यवस्थापिका तार कार्यावली माने व्यवस्थापिका भंग हो जाए सेते बेले जो गवर्नर एग्जीक्यूटिव पावर बा लेजिस्लेटिव पावर स्थिर करती से जो ऑर्डिनेंस पावर थाए ताहा 213 नंबर धारा उल्लेखित कराई. 217 कौन देछि ना गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट द हाई जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. 233 कौन देछि ना गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस. 234 कौन देछि ही हैज द पावर टू अपॉइंट पर्सन टू स्टेट जुडिशियल सर्विस. एवं 244 कौन देछि ना स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब. आशा करुच्ची आपण मैंने एक्चुअली ये जो टोटल आर्टिकलटा बुझीपारे. तापर जदि आम आलोचना करवा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स आम जान पारा कि जे ही अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बट ही इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट. देन क्वालिफिकेशन जब आलोचना करवा ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years. ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट. ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स. जो टेन्यूर कथा आलोचना करवा normally 5 years but he hold office during the pleasure of the president and he can resign by writing to the president. This question most important. से जो resign करती क्या को लिखिक न दिखती ना president को लिखी दिखती. He can transfer to another state also. He can be reappointed. यदि oath बा शपथ ग्रहण कथा कहवा then he take oath from the chief justice of high courts or the senior most judges of the high court. तो ओथ नाले से कौन प्रॉमिस करते ना प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशंस टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू सर्व द पीपल्स. एटा थिला एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन केसेस रे. जदि आम तार पावर एंड फंक्शन को देखा ताले फास्ट ला एग्जीक्यूटिव पावर. एग्जीक्यूटिव पावर कौन कराए ना कौन करते ना से ही हैज द पावर टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट द मिनिस्टर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट एज लाइक ऑफ द OPSC you can say in Odisha. Appoint the state election commissioners. He has the power to make the executive decision in the governor's names and also has the power to receive the report from the chief ministers. Legislative power basis देखिबा हले he has the power to declare the summon legislatures, prorogue legislatures, dissolve the legislative assembly, address the legislatures, send message to the legislatures. Also he has the power to give assent to the bills, may be accepted, may not be accepted, reserves bills for the president. Also last you can say that he has the power to declare the ordinance. An ordinance will be declared by the articles of the 213. Financial power यदि आलोचना करबा he has the power to declare the money bill only with governor recommendations. It means that without the recommendation of the governors a bill cannot be called as the money bill. Budget laid before the legislature with the governor approvals. Budget जो डिक्लेरेशन करे जे बिना गवर्नर अप्रूवल रे होई परिबो नाही. Supplementary grants
तांको द्वारा होता है और कंटिजेंसी फंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मध्य तांको द्वारा स्थिर करा होता है। जदि हम जुडिशियल पावर के देखिबा judicial power is declared under the article 161. This is also most important. So what is the judicial power of the governor? The governor may declare the grant pardon, reprieve, respite, remissions, suspend sentence, commute sentence. This is most important. एटा आसी एक्चुअली ऑप्शन वाइज बेसिस रे एवं को पावर से एंजॉय कर पारे नहीं बोले अबे क्वेश्चन टा आस्ते जदि हम डिस्क्रिप्शन पावर को देखिबा ताहले ही हैज द पावर टू इनवाइट द लीडर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, आस्क द चीफ मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी, reserve the bill for the president, recommend the president rules, and also he has the power to act independently in constitutional crisis. Now, बहुत important question जो special power the governors. Special power of governor is mentioned under the article 244. What is that power? Odisha is a fifth scheduled state. If you discuss in case of Odisha governors, governor has the special responsibility regarding the scheduled areas, tribal welfare, tribal advisory council, administration of the scheduled areas and report to the president. माने सबू राज्य रे समस्त गवर्नर क्षमता एमती किसी दिया जाए नहीं केते गुटे राज्य रे माने दिया जाइछि जहाँ जो जो राज्यटा फिफ्थ शेड्यूल रो अंडर रे आसुछि दैट्स गवर्नर एंजॉय द स्पेशल पावर. Then the governor and chief minister versus जदि हम देखिबा what is the main difference between the governor and chief minister? The governor is the constitutional executive head of the state and chief minister is the real executive head of the state. The governor is appointed by the president but the chief minister is appointed by the governor. Then governor is the nominal executive head of the state but the chief minister is the real executive head of the state. And if you discuss about the tenure of the governor, then you can find out that the fixed tenure of the governor is 5 years, but in case of chief minister you can say that the chief minister can hold the office while enjoying the assembly majority. Then important facts जदि आलोचना करिबा then वर्तमान केसेस रे the present governor is the present governor of the Odisha is Haribabu Kommambati, assume office from the days of the 3 January 2025 and official at residence जदि कहिबा एटा क्वेश्चन आस एक्चुअली ताहाकर ऑफिशियल रेसिडेंस कोन हुआ है ना राजभवन and it is situated where na Bhubaneswar and he is known as the constitutional executive head of the state. Then he is appointed by the president of India and he is known as the first state in Odisha. And last you can say that he is a representative of the president in the state. जदि हम ओडिशा रे गवर्नर लिस्ट देखिबा को माने माने फर्स्ट टाइम आसिथिले ताहले सर जॉन ऑस्टिन हबाक इज नोन एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा and during time of the independence of India, Chandulal Madhavalal Trivedi was the president, governor of the Odisha, and Kailasnath Kadju was the first independent governor of Odisha, and the currently the Haribabu Kommambati is the 25th governor of Odisha, and he is continuing from the days of 2025 to till today. So जदि आपको वीडियो भल लगे ताहले लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एंड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल इज टू कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.